So the problem is problem 3. Oh, it's not writing. Okay, so problem is you need to find the direction cosines for the Cartesian coordinates. That's problem 3 from Kaleem Akhtar book or MBD. You need to find a direction cosines for point 2 minus 1, 2. This is a problem related to work which we did in the last class. So 2 minus 1, 2 are basically x, y, and z. And in order to find the direction cosine, which is cos alpha, cos beta, and cos gamma, they were like L is equal to cos alpha is equal to x over r, m is equal to cos beta, if you remember the formula which we did last time. And I told you that this formula was a part of PPSC in very recent attempt. So in order to solve this, we have x, we have y, we have z, but we didn't have r. In order to determine r, we need to do x squared gamma y squared plus z squared. So r is equal to x squared, which is 2 squared plus minus 1 squared plus 2 squared. So it will be 4 plus 4, 8 plus 1, 9, 9, and that will be 3. So it will be 2 over 3 minus 1 over 3 and 2 over 3. So that will be the direction cosines for problem 3 motivated from MBD book. And in some previous papers, the MBD problems are as it is. In fact, CSS 2023 paper, the problem that comes in question 1, that was as ditto copy as it is written in MBD books. That was problem 16. A vector is given and you need to determine the curl for a certain point. So this will be of good importance for us. Okay, so let's move to the next topic, which is question 4, and that is about multiplication. हमने multiplication वाला topic start किया था. Now we look at how to move it along. Okay, it should be in one step. Okay, so question was how to multiply vectors, and we last time had a bit of discussion on scalar multiplication, that if we multiply a scalar with vector, then there are two cases. In one, where simple the magnitude change, direction may change depend upon the number is a negative or a positive. And the second case in which we multiply a vector with a dimensional scalar. For example, mass multiplied by velocity, that will give you momentum. So that scalar with vector, and the scalar is a dimensional scalar, so that will give you a different physical quantity. ना वो vector की length बदलेगी ना direction, सिर्फ vector ही बदल जाएगा. Okay, now in today's class we will be like vector multiply by vector. So if you multiply two vectors, in some cases you get a vector quantity, and in some cases you get a scalar quantity.
For example, you multiply R cross P, you get a vector quantity. And if you multiply, okay, you multiply force and distance, you get a scalar quantity, which is a vector. In fact, you get a vector quantity, which is a scalar. So based on two possibilities, there we have a cross and a dot. And by this convention, this is known as dot product, and this is known as क्रॉस प्रोडक्ट. सो इसी को अगर हम जनरलाइज लिखें तो दैट इज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एंड डायरेक्शन इज गिवन बाय एन यूनिट वेक्टर, क्योंकि हमने पढ़ा कि डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं. और स्केलर प्रोडक्ट में दैट विल बी ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा विच इज अ स्केलर क्वांटिटी. सो हमने वेक्टर और वेक्टर डॉट प्रोडक्ट को पढ़ना है, एंड दैट विल play a huge role in problem solving as well. So let me just erase it, and so we will try to do it side by side in order for a comparative analysis as well. Okay, I must look for some trick. Okay, so first is dot product, or known as scalar product. So first of all, its definition, that is A dot B is equal to AB cos theta. And what does this B and A cos theta tells? इसके लिए अगर आप एक वेक्टर इस तरह ड्रॉ करें कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कंसीडर दिस टू बी अ वेक्टर ए, और अगर आप इसका कंपोनेंट रिजोल्व करें, मैं इसको डॉट प्रोडक्ट नहीं देख रहा, मैं सिर्फ कंपोनेंट रिजोल्व कर रहा हूँ. दिस इज थीटा, cos थीटा विल बी बेस ओवर हाइपोटेनियस विच इज ए. तो ये आपके पास आएगा ए cos थीटा. तो अगर मैं इसको अलहदा करके लिखूं, ये कंपोनेंट अलहदा कर लूं, so what I get a projection. A cos theta is basically a projection of A on vector B. So ये basically आपको projection देता है. So if you are asked to find a projection of A on B, you basically need to determine A cos theta, which is equal to A dot B over B. And this is very important as per the problem solving is concerned. And if it is a vice versa case, projection of B on A, then it will be B cos theta is equal to A dot B over A magnitude. और magnitude हमें निकालना आता है, dot product हम लेना भी सीख लेते हैं. So this is basically the definition and the physical significance that dot product gives you the projection of vector on a B. So whenever you are looking for finding the projection in vector analysis, dot product is the way to go. Okay. Next, if I look at another side, A dot B is equal to AB cos theta. And if I switch it around, BA cos theta, which can be written as B dot A. So A dot B is equal to B dot A. And this is a very famous property known as commutative property. What does commutative property says? If the operation on the left hand side is equal to the same operation on the right hand side, it can be with respect to multiplication, it can be with respect to addition, and it can be with respect to other operations if they allow it to do so. Okay, so this is commutative property, and that holds it here. Okay, next, they are properties. We can give it a title, in fact.
properties. And the first one is the commutative property. The second and the onward properties depend upon the angle. What sort of angle is between two vectors? So first is the case of perpendicular. What is mean by perpendicular? That the angle between two vectors is 90 degree. So if the angle between two vectors is 90 degree, and we know cos 90 is 0, so it will be 0. Hopefully you know about these trigonometric functions. So let me just make it a table for you. I must do it like that. Excellent. So these are the trigonometric functions which you should know about. So we have cos theta, or maybe first sine theta as per the convention, otherwise there is no such necessity. Sine theta, it's sine theta, cos theta, and tan theta. I'm just making sure okay, we are on the same page. So it's 0. Okay, so it's 5. So it's 0 degree. Then we have 30 degree. So it's 0, 30, 45, 60, and then the 90 degree. And there's a very interesting way of remembering it, though you can remember it as it is. So 0, so it's like 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Find the square root of all. This is just a trick in order if you have problem remembering it, otherwise you should be familiar by itself. And if you solve it, you will get your answer. So 0 by under root 2, it will be 0. So first one is basically simply 0, a big 0. Then 1 and under root 1 is 1, and divided by 2 is 2. So it will be simply 1 by 2. Then under root 2 by 2 is basically 1 by under root 2. If you solve it, again, it's by just a trick I'm like to share with you. It's under root 3 by 2. Under root 4 is 2. Divided by 2, which makes it 1. So it will be 1. Then it can go alternatively. इसको आप बिल्कुल इसको shift कर सकते हैं. Other way around, वैसे इसका आंसर वही आएगा, but it's taking time, so I'm just doing it alone. So यहाँ से 1, ये 0, 60 वाला इधर 30 पे, ये यहाँ पे, और ये same. We know tan theta is equal to sin theta over cos theta. So 0 over 1 is 0. 1 by 2 over 3 by 2 is 1 by under root 3. That is 1, that is under root 3, and that is undefined क्योंकि something over 0 is not defined in mathematics. So यहाँ पे आपको जो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में चाहिए होंगी वो साइन की वैल्यू चाहिए होंगी. 90 इज बेसिकली परपेंडिकुलर, 0 degree is basically parallel,
और इसमें आप किसी में भी 180 डिग्री ऐड करेंगे तो आपकी सेम वैल्यू रिपीट होगी विद अ नेगेटिव साइन। फॉर एग्जांपल साइन 180 की वैल्यू क्या होगी? जीरो ही होगी, क्योंकि नेगेटिव से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोस 180 की वैल्यू -1 होगी, क्योंकि आप सेम वैल्यू को रिपीट कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ इट कैन बी डन। सो इन अ केस ऑफ परपेंडिकुलर, cos 90 0, back to the lecture, and then we did the parallel case. पैरेलल के लिए cos 0 होगा 1, सो इट्स ए बी। एंटी पैरेलल के लिए जैसे मैंने बताया -1 होगा, सो ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए बी cos 180। एंड देन देयर इज अ प्रॉपर्टी, आई टर्म इट एज सेल्फी प्रोडक्ट, क्योंकि उसमें आप खुद को ही खुद से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्केयर cos 0 1। सो दिस इज हाउ यू कैन डिटरमाइन बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। अब अगला पार्ट में यही प्रॉपर्टी हमें यूनिट वेक्टर्स के लिए चाहिए, और वो यूनिट वेक्टर्स के लिए प्रॉपर्टी से क्या मुराद है कि परपेंडिकुलर होगा बट यूनिट वेक्टर्स, पैरेलल होंगे या सेल्फ प्रोडक्ट होगा बट यूनिट वेक्टर्स। फॉर दैट लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। सो बेसिकली ए dot p is equal to 0 for perpendicular case. This is a sign for perpendicular. So if I have unit vectors which are perpendicular to each other, for example, I and j, I is for the x-axis, j is for the y-axis, and k is for the z-axis, and they are all are mutually perpendicular. So I dot j will be 0, j dot k will be 0, and k dot I will be 0. Same is the case of selfie product or self product, in which a dot a is equal to a square. सो इफ हम यूनिट वेक्टर की बात करें तो आई डॉट आई इज इक्वल टू आई स्केयर, और यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है बाय डेफिनेशन। सो आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, ए डॉट के इज इक्वल टू 1। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू रिजल्ट्स। व्हाई? बिकॉज दे विल हेल्प अस टू find the answer to this, which is a dot b is equal to axi plus ayj plus azk dot bxi प्लस byj प्लस bzk। जब आपने दो डॉट प्रोडक्ट लेना है दो वेक्टर्स का इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, सो व्हाट यू नीड टू डू इज यूजिंग दीज फॉर्मूलाज कि क्रॉस होंगे, डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स होंगे तो जीरो आएगा, और सेम यूनिट वेक्टर्स होंगे तो 1 आएगा। सो बेसिकली मैं इसको पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा ना, आपको जाने की जरूरत है। आई डॉट आई इज 1, सो ए एक्स बी एक्स। अब इसके अलावा जो होंगे आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, डोंट, नो नीड टू राइट। j dot I 0, no need to write, j dot j will give you non-zero answer, and then the final will be AZBZ. So when you are multiplying two vectors in a dot product manner, you just need to multiply their components. For example, A is equal to 2i plus 3j minus 4k, and B is equal to 4i plus 5j. I'm just taking value from myself. And I need to find A dot B. So what I need to do, just I dot I 8, 3 into 5 15, j dot j 1, 4 into 1 4, plus minus minus k into k 1। इसके अलावा सारे जीरो हैं। सो 15 plus 8 23 plus 4 27। So this is how you can find the dot product of two vectors by rectangular component manner, और इसके लिए आपको ये पार्ट हेल्प आउट करेगा। इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कि अगर इसी को मैं लिखूं a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, तो कोस थीटा अगर आपने निकालना हो जैसे कि हमने शुरू में बात की, तो इट विल बी लाइक a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी, एंड आई विल पुट अ रेड बॉक्स here
वाई आपको क्वेश्चन आ जाए कि यू नीड टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स और उसने ना बताया हो कि किस तरह करना है, तो पूरी फिजिक्स में अगर आपने दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल मालूम करना है तो यू हैव ओनली वन वे, एंड दैट इज cos theta. In fact, if I remember it well, CSS 2022, there was a question: find the angle between two Miller planes. That is from solid state physics जो आप हम करेंगे, तो उसमें भी दो मिलर प्लेन्स बेसिकली क्या है, दो वेक्टर्स हैं, तो तब भी यही फॉर्मूला लगना है, cos थीटा इज इक्वल टू फर्स्ट मिलर प्लेन डॉट सेकंड मिलर प्लेन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ टू मिलर प्लेन्स, एंड दैट्स इट, cos इनवर्स. सो जब भी आपको न्यूमेरिकल में एंगल मालूम करने के लिए कहा जाए या प्रोजेक्शन मालूम करने के लिए कहा जाए, यू हैव ओनली दिस फॉर्मूला इन होल फिजिक्स टू डू सो. So this is very important in that regard. Okay, so this concludes our dot product. Okay, so where was laser? Here is a laser. Okay, so we started it from dot product. We did its definition. A dot b is equal to ab cos theta. We talked about the projections. We did the properties case and the first properties of commutative. Then we have perpendicular case. Then we have parallel case. Then we have self product case. And based on the perpendicular and the self product case, we have special cases for unit vectors. And from those cases of unit vectors, we determine how to multiply two vectors in rectangular components manner. And that will be helpful for solving many, many, many problems. And for that, this thing helped us, and you can remember it if you like to. In fact, you have to. And those will be for the sign जो अभी हम केस करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट. Okay, so let's move to the क्रॉस प्रोडक्ट thing. That will be easy thing now क्योंकि हम उस जैसा काम कर चुके हैं. क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, and just write it for your convenience that this question was part of PMS 2020. Cross product as it is stated line from MBD, Kaleem Akhtar. So same in that manner जैसे हमने पहले किया, what we did, हमने कहा कि सबसे पहले तारीफ करें. So क्रॉस प्रोडक्ट की क्या तारीफ है कि अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें and you get a vector. AB sin theta doesn't make it a vector. AB sin theta is just simply the magnitude. What makes it a vector is this unit vector. And that unit vector is given, direction of that unit vector is given by right hand rule, which is basically just like physical significance of a dot product, that is projection, and that is a normal. So if you have vector A and you have vector B, and you need to find the direction of A cross B, you need to curl your finger in a shortest angle. अब shortest angle ये बनता है, जब external angle भी है लेकिन ये longest angle है, तो shortest angle की direction में अपना हाथ आप curl कर लें, जो कि मैं अब इधर शो नहीं कर सकता, लेकिन इस तरफ, और आपकी जो फिंगर है दैट विल पॉइंट, ये भी हम बुक से देख लेते हैं, वहां पे 3D पिक्चर बनी हुई है. सो ये जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एन. सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू ए क्रॉस बी, विच इज बेसिकली अ नॉर्मल. दो वेक्टर्स के बिल्कुल ये परपेंडिकुलर होगा इन अ 3D. यानी अगर आपके दो वेक्टर्स प्लेन में है तो ये स्पेस में होगा, जी कंपोनेंट के लॉन्ग होगा. अगर ये एक्स है और ये वाई है तो ये जी में होगा. Okay, so this is the definition and the physical significance. Now come the example part. So we have torque, R cross F, we have L, R cross P, we have V, R cross omega, and many of further example, but
जैसे कि पीएमएस 2020 में भी पूछा गया तो सिर्फ 2 एग्जांपल्स कहा गया है, तो आप 2 एग्जांपल्स यहाँ से बता सकते हैं। ओके, नाउ मूव टू द प्रॉपर्टीज पार्ट, क्योंकि इसके बाद अगर आप डॉट प्रोडक्ट को रिकॉल करें, सो व्हाट वी डिड प्रॉपर्टीज देन। सो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमने, मैं जस्ट रिकॉल करवा देता हूँ कि अगर इफ कि हम सेम उसी पैटर्न पे करेंगे काम। ये देखें, फर्स्ट डेफिनेशन फिजिकल सिग्निफिकेंस, देन द प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में पहले कॉम्यूटेटिव, फिर परपेंडिकुलरनेस, फिर पैरेलल, एंटी पैरेलल, सेल्फ, और उसके बाद उसके यूनिट वेक्टर्स और उसकी बेस पे रेक्टेंगुलर कंपाउंड। सेम यही पैटर्न यहाँ पे हम फॉलो करेंगे, डिटो कॉपी, जस्ट लाइक जैब से फर्क क्या पड़ेगा कोस और साइन की प्रॉपर्टी का। सो प्रॉपर्टीज, first property will be of commutative, and if we multiply a cross b, we get ab, ये हम लिख चुके हैं, so I think we just move to b cross a. So b cross a is equal to ba sin theta and unit vector. अब ये इसको ए भी लिख लें, कोई मसला नहीं, इट्स अ मैग्नीट्यूड। लेकिन जब आप उसी दोबारा आएंगे, अब बी से अगर ए की तरफ आए, पहले हम ए से बी की तरफ से, अगर आप बी से ए की तरफ अपना हाथ घुमाएं, तो आपका जो थंब है वो अब नीचे की डायरेक्शन में होगा। इसको अगर मैं के कह दूं, इट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन, और के और एन में क्या है, मैग्नीट्यूड बराबर होगी लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। सो इट्स बेसिकली इक्वल टू माइनस ए बी एन। सो हम कह सकते हैं कि बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी, विच शोज कि इट डज नॉट कम्यूट, इट एंटी कम्यूट। एंटी कम्यूट से मुराद है कि दोनों कम्यूटेशन रिलेशन में माइनस का आ जाना, और दोनों में अगर माइनस ना आए तो कम्यूट, एंड द थर्ड केस कि कोई रिलेशन भी ना हो, which is quite possible as well. So this is property 1, it does not commute. Then we have property 2, which was perpendicular case, and what we know about from this table, that sine 90 is 1, sine 0 is 0. So in case of perpendicular, we have sine 90 is equal to 1. So A cross B is equal to AB sin 91, और ये, और अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करें, यू जस्ट नीड टू पुट अ बार हेयर, और ये रह जाएगा, क्यों, क्योंकि यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है। इसी तरह पैरेलल केस में आ जाएं या एंटी पैरेलल केस में आ जाएं, इसमें हम दोनों इकट्ठे कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि साइन 0 भी 0 है और साइन 180 भी 0 है। सो ए क्रॉस बी विल बी 0। यहाँ पे एक मिस्टेक आप करेंगे और फौरन वो पकड़ी जाएगी। मैं इस पे नंबर काटना बहुत पसंद करता हूँ। इट्स नॉट 0, इट्स नल वेक्टर, क्योंकि दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट कभी भी स्केलर नहीं हो सकता अनलेस कि आप मैग्नीट्यूड साइन लगाएं। सो ए क्रॉस बी इज नल वेक्टर, सो देयर शुड बी, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है जैसे कि पीएमएस 2020 में आया, तो ये एक गलती के चांस होंगे कि यहाँ पे स्टूडेंट गलती करेगा। सो यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस, that there should be a vector sign in order to indicate that this is a unit vector, not a scalar zero, क्योंकि स्केलर जीरो और नल वेक्टर में फर्क है in this context. Okay, then is the case of selfie product, or as I like to say self product. तो सेल्फ प्रोडक्ट में भी 0 डिग्री होता है, जैसे कि यहाँ पे 0 है, तो आपके पास ए क्रॉस ए विल बी अगेन इक्वल टू नॉट 0 बट नल वेक्टर। सो you should be aware of this null vector. Okay, now that what did we did in the next part, in the dot product case, we applied this
two unit vectors, and we will do same here. Unit vectors. So पहले हम सेम यूनिट वेक्टर्स वाला अप्लाई करते हैं, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमने पढ़ा कि सेल्फ या सेम वेक्टर्स के केस में आंसर जीरो आएगा और ये जीरो आएगा, इसमें नल वेक्टर नहीं आएगा क्योंकि यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड के केस में हम यूनिट वेक्टर्स ले रहे हैं, तो ये जीरो लिखेंगे, नल वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम दूसरा केस लें, आई डॉट आई क्रॉस जे, सो ए क्रॉस बी, या मैं जस्ट इससे पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, एन यूनिट वेक्टर, और एन यूनिट वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है बाकी दोनों के। तो अगर हम इस पे अब ये यूनिट वेक्टर्स की फॉर्मूला अप्लाई करें, तो इट विल बी आई क्रॉस जे, तो आई की मैग्नीट्यूड, जे की मैग्नीट्यूड साइन 90, एंड आई और जे के परपेंडिकुलर क्या होता है, के, एक्स वाई के परपेंडिकुलर जी। सो आई क्रॉस जे विल बी इक्वल टू आई की मैग्नीट्यूड वन, जे की मैग्नीट्यूड वन, साइन 90 की मैग्नीट्यूड वन, तो यू विल लेफ्ट विद के। So similarly, J cross K will be equal to I, and K cross I will be equal to J. So usually we make this sort of permutation I, J, K. That if this it follow this permutation I, J, K, so you will have a positive answer. I cross J will be K, J cross K will be I, K cross I will be J. But if you move from reverse manner, J cross I क्रॉस के और k क्रॉस j, तो इट विल बी इक्वल टू द नेक्स्ट वन बट विद अ नेगेटिव साइन। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि जब आप डायरेक्शन बदल देते हैं तो आपके पास नेगेटिव साइन आता है। ठीक है, तो दिस थिंग अप्लाइज हियर, एंड द लास्ट थिंग we did in previous case was the how to solve it for the rectangular component case. So, उसके लिए सिंपल आपने 3 by 3 का मैट्रिक्स एक सोल्व करना है, ए क्रॉस बी। सबसे पहले यूनिट वेक्टर्स आएंगे, उसके बाद पहले के कंपोनेंट, एंड देन दूसरे के कंपोनेंट, and this will be a 3 by 3 matrix, and hopefully you know how to solve it, otherwise we can discuss it in the problem case जब हम इसकी प्रॉब्लम देख रहे होंगे। So a cross b will give you the rectangular component cross product, and अगर इसी a cross b, जो बेसिकली क्या बन रहा है आपके पास, आप प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ले लें, so that indicates an area, and area किसका, that is an area of parallelogram। और अगर आपके पास एक पैरालेलोग्राम है, उसको अगर आप आधा करते हैं तो क्या बनता है, दो ट्राइंगल्स बन जाती हैं। तो लिहाजा अगर आप इसी एरिया को आधा कर दें, सो दैट विल बी एन एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। सो दिस इज अ ट्राइंगल साइन। सो इस तरह ये एक फिजिकल सिग्निफिकेंस में आ सकता है कि आपके पास जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो आपको एरिया देता है पैरालेलोग्राम का, अगर उसे हाफ कर लेंगे तो दैट विल बी एन एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो till here we have discussed two topics, scalar product एंड वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के लिए हमने सेम पैटर्न फॉलो किया है। अगर मैं वो पैटर्न लिख दूं यहाँ पे, सो फर्स्ट इज द डेफिनेशन, नेक्स्ट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस, देन एग्जांपल टू मिनिमम, देन प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में सबसे पहली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, देन परपेंडिकुलर, देन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल, देन सेल्फ प्रोडक्ट, देन यूनिट वेक्टर्स,
यूनिट वेक्टर्स में हमने फिर परपेंडिकुलर आई, जे और के का देखा. You can term it as different and then same. दोनों के लिए different results हैं. And the last one is rectangular components. So this is a whole symmetrical way. अगर आप दोनों टॉपिक्स देख लें तो हमने यही पैटर्न फॉलो किया है और यही पैटर्न से हमें कंक्लूड हुआ है. दोनों में फर्क सिर्फ इस टेबल की बेस पे है, बेस ऑन दिस टेबल. अगर आप वैल्यूज को देखेंगे तो वो अकॉर्डिंगली ही वो वहां पे कंक्लूड हो जाए. ओके, यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है आप पूछ लें. आई एम अलाउइंग यू टू स्पीक. यू कैन पुट अ क्वेश्चन इन अ चैट बॉक्स एज वेल एंड लेट्स सी कि टाइम के अकॉर्डिंग फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, यहीं पे वाइंड अप करते हैं. You can put a question in chat box as well if you have, or you can simply write there is no question. So I know I had to proceed. Okay, sure. फिलहाल हमारे जो क्वेश्चन है वो सिर्फ दो ही हैं, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, और एक 2 पेज स्केलर प्रोडक्ट के हैं, 2 पेज वेक्टर प्रोडक्ट के हैं, सेम उसी पैटर्न पे. 1 पेज में जस्ट मैंने समराइज किया है कि हमने किस पैटर्न को फॉलो किया है, और 1 पेज में मैंने जस्ट उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज की है कि किसकी बेस पे आप ये डिसाइड करेंगे कि साइन कब जीरो होगा, कोस कब जीरो होगा. सो दिस 2 2 1 1, सो 6 पेजेस सो फार. और आपकी बुक पे कौन से हैं ये भी मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि मैं अभी इसे ऑफ करूंगा तो व्हाइट बोर्ड हमारा एंड हो जाएगा. श्योर. ओके, इसी की हम प्रैक्टिस करते हैं. मतलब ये जो हमने यहाँ पे कंक्लूड किया, अभी यू कैन हैव क्वेश्चन मोर, और वो जैसे उसी की प्रैक्टिस होगी सो इट विल बी हेल्पफुल. डॉट प्रोडक्ट तो हमने देख लिया ना, सिंपल के आपने किस तरह रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में लिखना है, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से. मैंने आपको एक एग्जांपल भी करवा दी, लेकिन वेक्टर की मैंने आपको भी एग्जांपल नहीं करवाई. वेक्टर की एग्जांपल के ये जो आई जे की है इसको हम किस तरह रिजॉल्व करेंगे. सो उसी एग्जांपल को करने के लिए हम क्या करते हैं, एक वेक्टर लेते हैं ए, दैट इज ए एक्स आई प्लस ए वाई जे. जी, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट अगर जीरो के इक्वल हो तो वो ऑर्थोगोनल होगा, और ऑर्थोगोनल बेसिकली परपेंडिकुलर को ही कहते हैं. सो यू कैन राइट अ नेम. परपेंडिकुलर के लिए जो दूसरा नाम है दैट इज ऑर्थोगोनल. ऑर्थो से मुराद ये भी परपेंडिकुलर होता है. सो यू राइट. ओके.
So you have A is equal to AXI plus AYJ plus AZK. Then we have B is equal to BXI, just in order to make it simple, और वो बाकी नहीं होंगे तो वो जीरो हो जाएंगे. And for the C, it's CXI plus CYJ. So we have taken two vectors to be equal to, sorry, one to be in three components, one to be in two components, and one to be in one component. So these are the simpler one. So let's start with it. Let's find B cross C. So how we will do it? First unit vectors, then vectors components. Only Bx is non-negative, non-zero, or remaining at zero. And in C, the first two ones are non-zero, and then we have a zero. So just simplify, solve it. So how we'll solve it? That's the point. What you do, you will take this and this, and जो बच जाएगा, you will write it. So I 0 0 CY 0. Let me repeat again what we did. We did it like that, and जो बच गया वो हमने लिख दिया. So this is how you can solve a 3 by 3 matrix. Similarly, then the second one J, and there is always a rule. First one is plus, second one is negative, then the plus known as cofactors, which I don't think we need to go in deep. So same here, you cancel out the J wale, so you are left with this as a first column and this as a second column. So just write it as Bx Cx 0 0. Then third one as K. Again, do it like that. You will remain with this box and just write that box there. Bx 0 Cx Cy. So simply solve it. 2 by 2 determinant have this multiply by this multiply by this with a negative sign, and it will come out to be 0. So simple 0. Multiply with this, multiply by this with a negative sign, again 0, because it worked like that. But this is not 0. Bx Cy minus, but this is 0. So what you are left with is Bx Cy k unit vector. So this is a short answer for what we did, how to solve a 3 by 3 matrix. Okay. Okay. Now I will do another thing, that is A cross B cross C. So how should I write it? I, J, K. What is A components? AX, AY, AZ. What are the components for B cross C? We will look here. For B cross C, the first one is 0, I. The second one is 0, I. We have just the K one. So it will be BX, CY. So again, simple manner, I'm just try to give you an idea to how to solve a 3 by 3 matrix. And okay, so you multiply it like that. So you will left with AY BX CY minus 0. So I didn't write it again. This one vanish. This multiply by this minus this multiply by this. So minus J, you vanish this stuff. So AZ को 0 से करेंगे.
और ए एक्स को इससे करेंगे। सो पहला जो है वो नॉन जीरो होगा, फर्स्ट इंटू फोर्थ ए एक्स बी एक्स सी वाई, एंड द लास्ट वन के अगेन दिस दिस। सो ये जीरो है क्योंकि दोनों ही जीरो से ज़रब हो रहे हैं। सो हम इसको सिंपली जीरो लिख देते हैं। सो दिस इज यू आर लेफ्ट विथ ए एक्स ए वाई बी एक्स सी वाई आई माइनस ए एक्स बी एक्स सी वाई प्लस जीरो। ओके, hopefully it's fine till here. And if you had a close look at this, what you see that you have there ay cy, and here you have ax bx. Similar component are here, so we can have something particular here. So for that I put it as equation one. इसमें से ये जीरो नहीं है। बेसिकली मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन साथ एक क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी मैं इसमें कवर कर रहा हूँ। So this is equation one and I am almost done. So be patient with me. अब इसी वेक्टर्स के लिए ये जो मैंने लिखे हैं ए बी सी, मैं एक और चीज मालूम करना चाह रहा हूँ which will conclude our today's lecture. मैं पहले लिख देता हूँ दोबारा, a is equal to a x i प्लस ए वाई जे। और ये पेपर में लिखा होगा कि आपने ये चीज मालूम करनी है, आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए कि आपने किसके लिए क्या लिया था। अब मैं नॉन जीरो नहीं लिख रहा। तो आपने क्या करना है, ए डॉट सी मालूम करना है। ए डॉट सी क्या होगा, पहले को सी के साथ सिर्फ डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो क्या रूल है कि आई वाला आई के साथ, वाई वाला वाई के साथ, और के वाला के साथ, जो कि है ही नहीं, जीरो है इधर। सो लिहाजा वो हम नहीं लिखते। अब आपने इसको बी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। एंड एज आई टोल्ड, ये लिखा होगा वहां पे, इसका मैं रूल भी बता देता हूँ तो इसका परेशानी नहीं होनी कि ये मैं यही क्यों कर रहा हूँ। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए एक्स सी एक्स बी एक्स आई। क्योंकि अब जारी बात है, हम आई को आई तो नहीं कर रहे, हम तो सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो ए वाई सी वाई बी एक्स आई। ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड ए डॉट बी फ्रॉम दिस सिंपली। तो क्या आएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख लेता हूँ, ए एक्स बी एक्स, क्योंकि बाकी सारे जीरोज हैं। और इस ए डॉट बी को मैं, जैसे मैंने ए डॉट सी को बी से ज़रब दिया है, इसमें ए डॉट बी को सी से ज़रब दूंगा। तो इसको जब मैं सी से ज़रब दूंगा तो इट विल बी ए एक्स बी एक्स सी एक्स आई प्लस ए वाई, सॉरी, ये लिखा हुआ है, यानी मैं इसको सिर्फ से ज़रब दे रहा हूँ। ये सी एक्स से ज़रब दिया तो ये आ गया, सी वाई से दूंगा ए एक्स बी एक्स सी वाई जे, और फिर इससे जब ज़रब दूंगा तो ये ज़ीरो है, तो वो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं। अब इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट करना है, ये आंसर को और इस आंसर को। मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट। तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या होगा, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए इंटू बी इंटू सी। तो इसमें ए एक्स बी एक्स सी एक्स आए है, इसमें ए एक्स बी एक्स सी एक्स आए है। जो माइनस होगा तो ये इसके साथ कट जाएगा। लेट मी डू इन अ डिफरेंट कलर। तो ये इसके साथ कट जाएगा। और इसके बाद आपके पास यहाँ पे है ए वाई सी वाई बी एक्स आए, जो नहीं कटेगा, ए वाई सी वाई बी एक्स आए माइनस ए एक्स बी एक्स सी वाई जे। और अगर ये जो रिजल्ट आपका आया है
ए वाई सी वाई बी एक्स आई माइनस ए एक्स बी एक्स सी वाई, इसको अगर आप इससे कंपेयर करें, दिस वन, isn't it the same a y c y b x I minus a x b x c y j? Let me show it again. a y b y a y c y b x I minus a x b x c y j, तो ये बराबर है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि a क्रॉस b क्रॉस c इज इक्वल टू a डॉट c इंटू b माइनस a डॉट b इंटू c। और इसको याद करने का तरीका होता है, अगर आप इसको 1 कहें, इसको 2 कहें, इसको 3 कहें, तो इट्स लाइक A32 माइनस 123, 132 132 माइनस 123। लेकिन आपको जो पेपर में आएगा ये दिया गया होगा कि प्रूव दिस, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ इसको सॉल्व करना है। एंड दिस क्वेश्चन इज पार्ट ऑफ पीपीएस पीएमएस 2023 एंड एज वेल सीएसएस में भी अपीयर हो चुका है। सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको थ्री बाई क्रॉस प्रोडक्ट सोल्व करना आता है, डॉट प्रोडक्ट सोल्व करना आता है, तो सिर्फ आपने ये चीज का ध्यान रखना है कि आपने ये मैट वेक्टर्स ये लेने हैं, क्योंकि अगर आप तीनों नॉन जीरो ले लेंगे तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आंसर उससे भी आ जाएगा बट इट विल बी अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्टोरी। सो सिर्फ ये लेने हैं, लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करें, राइट हैंड साइड सोल्व करें। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ना बनाने की कोशिश करें, अगेन मुश्किल हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड को लहदा सोल्व कर दें, राइट हैंड साइड को लहदा सोल्व कर दें, जैसे हमने किया इंडिविजुअली, और उसको जब आप सोल्व करेंगे इक्वेशन 1 बिकम्स इक्वेशन 2। और ये आपकी एमबीडी की बुक में क्वेश्चन नंबर 9 है। सो एज आई टोल्ड कि हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं लेकिन साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर कर रहे हैं। ओके, पेज 9 मैं दोबारा समझा देता हूँ। सो पेज 9 में हमने क्या किया है, रिक्वायरमेंट थी कि आपने ए डॉट सी के डॉट प्रोडक्ट को बी से मल्टीप्लाई करना है, 132 132 एंड देन 123 विच इज 1 इंटू ए इंटू बी एंड देन द सी। अब सिर्फ ये जब आपके सामने पड़ा होगा तो इट विल बी वेरी इजी। तो हमने 132 करने से पहले 1 और 3 किया, 1.3, 1.3 के लिए हमने ए और सी का डॉट प्रोडक्ट लिया विच इज ए एक्स सी एक्स प्लस ए वाई सी वाई, सिंपली क्योंकि ये जीरो है, ये जे जे हो जाएगा और एक्स एक्स हो जाएगा। और फिर हमने उसको बी के साथ 132 पूरा करने के लिए, पहला डॉट प्रोडक्ट है, दूसरा सिंपल है, हमने लिख दिया। तो जब सिंपली करेंगे तो यूनिट वेक्टर आपका पॉप अप होगा, वो खत्म नहीं होगा। डॉट प्रोडक्ट में यूनिट वेक्टर सिर्फ खत्म होता है, बाकी किसी भी मल्टीप्लिकेशन में यूनिट वेक्टर खत्म नहीं होता, ना ग्रेडियंट में ना कर्ल में। फिर आ जाए, ये हो गया हमारे पास 1 3 2। अब हम आते हैं 1.23 की तरफ। ओके, ओके। सो 1.23 की तरफ आते हैं, तो 1.2 में हमारे पास पहले आ जाएगा कि हाउ वी डिड इट, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स विच इज 1 इंटू 2। तो सिंपली क्योंकि दोनों में ए एक्स और बी एक्स ही सिर्फ था, और फिर उसको हमने सी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 1 इंटू 2, सिंपल मल्टीप्लीकेशन 3, सो यूनिट वेक्टर्स पॉप अप होंगे। और अब हमने क्या करना है, 132 माइनस 123, ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी। तो माइनस जब किया तो ए की टर्म सेम है, वो टर्म माइनस हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और बाकी जो टर्म्स बचेंगी वो आपके पास वैसे ही आ जाएंगी। और वो उसको अगर आप कंपेयर करेंगे अपनी इक्वेशन 1 के साथ, तो वो सेम उसी की कॉपी होगी विच विल शो के वन इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 विच शोज this is equal to this. So this is how you can do it. So that concludes our class for today. We did 3 questions from MBD. Just let me show them as well. So this is our first question.
how multiplication of two vectors. Question 4, so same pattern जिसने आपको करवाया है, इसने यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर पैरेलल में ही डिस्कस किए होंगे, लेकिन मैंने आपको सेपरेट बना के दिया, विच इज अ बेटर वे एंड एन easier way. Then again, for vector product, so this is how you can put your thumb up. Then examples, then commutative property, then perpendicular vectors. Again, unit vectors are there, but it's better if you put a separate point for unit vectors and unit vectors for parallel. Basically, this is not a unit vectors case, this is a self product case जो कि उसने पहले लिखा हुआ है, इसलिए मैंने यूनिट वेक्टर सेपरेट बना दिए, प्रॉब्लम ही नहीं. क्रॉस प्रोडक्ट, इसमें डायरेक्ट आपने इसके बाद ये करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपने ये सिर्फ 3 by 3 का मैट्रिक्स बता देना है, और ये इसकी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो फिजिकल सिग्निफिकेंस कह सकते हैं. सो क्वेश्चन 4 and 5, देन वी मूव ऑन टू क्वेश्चन 9, which is here. Show that A cross B cross C is equal to A dot C into B minus A into B into C, 132 minus 123. So उसको आपने करने के लिए सिंपली ये जो आपने कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, दैट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. बाकी सिंपली आप इसे इजीली कर लेंगे, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए मुश्किल नहीं होता. सो ये उसने सिंपली सोल्व किया, लेफ्ट हैंड साइड को लहदा सोल्व किया, राइट हैंड साइड को लहदा सोल्व किया, और सिंपली उसको आमने सामने रख दिया. उसमें कोई आपने किसी एक साइड से दूसरी साइड बनाने की कोशिश नहीं करनी, और वहां से आपके पास ये प्रूव हो जाएगा. इसके बाद क्वेश्चन 10 है, ये आप ट्राई कर सकते हैं, सेम उसी पैटर्न पे होगा कि आपके पास ए बी सी है, और आपने क्वेश्चन 10 को ये जो दिया गया है इसके इक्वल प्रूव करने की कोशिश करनी है, इसी तरह जो इससे पहले क्वेश्चन है विच इज क्वेश्चन 7. तो ये भी इसी तरह हो सकता है, इसमें उसने तीनों ए बी सी लिए हैं, और उसको उसने, इसे कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्योंकि आप इसमें डॉट और क्रॉस को मर्ज करते हैं, और इसमें ये शो करना है कि ये तीनों बराबर हैं. तो क्वेश्चन 7 and 10 आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इट विल बी ऑन द सेम पैटर्न, सो यू कैन टेक इट एज अ होमवर्क, और इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो वी विल डिस्कस इट अलोंग. ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, एंड